Hello, everybody. Good evening. I'm Dr. Mukesh Pareek, and I'm live again. This is our third video in the series of structuralism. In the first video, I simply discussed the basic theories and definition of structuralism, like what is structuralism, like what is signifier, what is signified, and what are the theories of Saussure and what are the role of the other structuralist writers and critics, for example, Levi Claude Strauss. And I also talked about, in the second lecture, I talked about certain other important aspects, for example, the five codes of Ronald Barthes. In today's lecture, I have come up with a very important book. Those students who are seriously appearing in this exam of NET and JRF, English literature, they must be knowing that in last exam of NET and JRF, there was a question from Ronald Barthes. Roland Barthes. We call this writer Roland, Roland. Roland Barthes. Sometimes we pronounce it simply Roland Barthes, BAR, but the spelling is Barthes. So I just pronounce it according to the spelling so that students can understand. So I'll be a bit bilingual, in explaining English as well as Hindi, so that South Indian students can also understand. तो लास्ट एग्जाम में रोला बार्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि उनकी जो बुक है माइथोलॉजीज, वो चार ऑप्शंस में से आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस दे आस्क्ड यू अ क्वेश्चन दैट हु हैज रिटन दिस बुक. बट why I am delivering this lecture if already the question has appeared? Because this is not our policy, that if a question has already appeared in this exam, then it does not mean that it will not appear or they will not ask you, any other question from the same book. Mythologies जो book है, the book Mythologies written by Ronald Barthes, it falls in the category of structuralism. There are two reasons behind that. ये किताब structuralism के अंदर क्यों स्टडी की जाती है? Because first of all, the writer has taken myth as a sign. And आपको मालूम ही है कि स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते हैं? We study language as a sign. तो राइटर ऐसे कह रहा है कि माइथोलॉजी का मतलब होता है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज है, सोशली कंस्ट्रक्टेड मिथ है, एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा जो हमारे चारों तरफ होता है, उस पे लिखी हुई किताब है ये. इसमें राइटर ने इस किताब को राइटर हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक का नाम है माइथोलॉजीज एंड एक का नाम है मिथ टुडे. सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द बुक, माइथोलॉजीज एंड सेकेंड पार्ट इज मिथ टुडे. द फर्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन सेलेक्टेड मॉडर्न मिथ्स. मॉडर्न मिथ्स का मतलब है राइटर ने बहुत सारी बातों के ऊपर बात की है. टेलीविजन पे बात की है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री पे बात की है, फैशन पे बात की है. सो ही हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स. टीवी प्रोग्राम्स पे बात की है, रेडियो एडवर्टीजमेंट्स पे बात की है, मैगजीन्स पे बात की है. सो ही हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. यहां तक कि उसने कोल्ड ड्रिंक को भी अपने स्टडी का एक हिस्सा माना है कि किस तरह से. इससे पहले कि मैं आगे डिटेल में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बुक में वो कह क्या रहा है कि चारों तरफ आज के मॉडर्न एज में, इन दिस मॉडर्न टाइम्स, व्हाट वी सी कि कुछ चीजें ऐसी क्रिएट कर दी जाती है हमारे सामने जो ट्रूथ नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है. दे आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर कि वो हमें सच लगने लगती है. तो आपको मालूम है कि द थिंग्स विच आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस इन सच अ मैनर दैट दे लुक ट्रूथ, दे लुक ट्रू टू अस, उनको इंग्लिश में हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फैक्ट आपके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बुक, कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, क्योंकि आपने मार्क्सिज्म पे भी सीरीज अटेंड की थी, तो मार्क्सिज्म में हम एक चीज को स्टडी करते हैं और वो है आइडियोलॉजीज. कि आइडियोलॉजीज को क्या बोला जाता है? फॉल्स कॉन्शियसनेस, जैसे कि हमने स्टडी किया था. तो आप अंदाजा लगाइए, जस्ट इमेजिन दैट अराउंड अस throughout the world, the people who are in power, they try to bourgeois, जिनको अपन bourgeois बोलते हैं. The word bourgeois has also come from the literary theory Marxism. तो जो the people who are in power, they create a myth around us, they create a false consciousness, और उनको इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि हम उनको सच मानने लगते हैं. एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ. The writer has taken one example in this book. The writer is talking about
Yes, Mr. Palani, I'll be talking about this topic in Hindi as well as English, because my North Indian students don't understand exactly English, so I'll be translating. So, in this book, Mythologies, the writer has taken one example, and that is the example of red wine. He says that red wine, the people who produce red wine, that they have advertised red wine in such a manner that, as you all know, that wine is always harmful for the health. Okay, it is harmful for liver, but still, it has been propagandized, it has been orchestrated in such a manner that, people in the peak of summer, they consume this liquor in such a manner that they consider that it is quite healthy for them. इसका मतलब है, it means that, through advertisement, it is a myth which is created that it is good. One more example I give you from my side. Like, what is the exact meaning of this book writer is talking about? The writer is saying that in mythologies, people in power, they create images, they create icons, they create certain value system, they create certain culture, they create a kind of fashion, which start looking to us very natural. But actually, it is not natural. It is manufactured. It is sponsored. It is something which is harmful actually for the common people. But because some people are earning from that, so it is propagandized in such a manner that people consider that this is something very very important. तो मैं फिर से बात करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म पे एक और स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड दैट इज mythologies. This book was written by Roland Barthes, and it was written in 1957. And in this book, there are two sections. First section is mythologies, and the second section is myth today. Okay, and as I told you that the writer has considered that the people who are in power, they create certain value system around us in such a manner that the people who are not in power, the working class people, they start thinking about these things which are created by the bourgeois or the people in power, that they consider it that they are natural. अब इससे पहले, before it, that I start talking about mythologies and the other things which are related to this book, let me talk about what is myth. Can you answer me, like, what is myth? Just think, like, suppose in a class of literary theory and criticism, a teacher asks you that, students, what is a myth? And can you explain to me, like, what is a myth? Because you must have heard about mythologies. You must have heard about, like, Indian mythology, or say Hindu mythology, Christian mythology, Greek mythology. What is exactly mythology, and what is a myth? Can you answer me? Can you hear me? If you can hear me, then I'm waiting. Tell me, what is a myth? So no answer is coming from your side. Myth is actually a kind of story, a kind of verbal statement, a kind of proverb, a kind of say saying, anything, or it can be an image, it can be a value system, anything which make us understand something. I would like to give you one example, that this common perception of human being try to understand by touching. It is like models. No, this is not the correct answer. Myth is, let me explain, like, what is myth. Myth का मतलब होता है कि हम consideration of false thoughts is myth. No, exactly, it is also not so that false consideration is myth. वो तो that thing is said by this writer Roland Barthes. अपन को पहले ये we should talk about, first of all, like, what is myth. मैं समझाता हूँ आपको myth क्या होता है. Myth होता है कि हम अपने लिए एक स्टोरी बना लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन को समझने के लिए. रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे, बोल के देखिए. किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन को, फिर अब फिनोमेनन क्या होता है? कोई भी चीज जो जब फर्स्ट टाइम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो हो क्या रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन. अब इसको कैसे समझाऊं आपको?
जो भी स्टोरीज हमारे चारों तरफ माइथोलॉजी में लिखी गई हैं, इसका मतलब है कि वो कोई कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए उसको लिखा गया. आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल. Like in Indian mythology, all the rivers are given a feminine character, complex phenomenon. And ठीक है. नहीं, ये भी कोई आंसर नहीं है इसको. और लेट मी गिव यू गुड वर्ड्स फॉर दैट, कि कोई चीज टफ है उसको समझने के लिए वी मेक अ स्टोरी, एंड दैट स्टोरी वी आवरसेल्फ मेक. एक एग्जांपल है, आई हैव वन एग्जांपल फॉर यू. जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बादल जा रहे होते हैं बारिश के मौसम में. इन द रेनी सीजन द क्लाउड्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन. तो हम क्या सोचते हैं बताओ, कि बादल जा रहे हैं. अच्छा, वो द क्लाउड्स आर वाइट. अच्छा, जब काले बादल आ रहे थे तो हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ, कि वो पानी भर के आ रहे हैं. ओके, इसका मतलब है वी हैव क्रिएटेड अ मिथ टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हेन इट रेन्स एंड व्हेन इट डज नॉट रेन. तो आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि सारी जो रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, आप देखिए, ऑल दीज रिवर्स, दे हैव बीन गिवन अ फेमिनिन कैरेक्टर और अ फेमिनिन नेम. इसका मतलब क्या है? एंड इन माइथोलॉजी यू फाइंड दैट दीज वर नॉट रिवर्स ओनली, दे आर कैरेक्टर्स. They are characters. They marry with somebody, they produce children, but you have never come across a story where like Ganga. I would like to give you an example of Ganga. Ganga marries Shantanu in Mahabharata, but she does not remain with her. She gives her children, then she kills the children, but the last child, that Bhishma Pitama, he says that she says that if you stop me, I will just leave you. If I'm killing the children, you have no right to stop me or question me like why I'm killing the children. आपको पता है ये कहानी? तो अब जरा देवदत्त पटनायक is a great mythologist of India today. If you read his books, you will come to know that he is explaining in very simple manner every mythology from a very scientific manner, कि भाई हर कहानी का अपना एक मीनिंग है. इसका मतलब है कि माइथोलॉजीज जो हम समझने जा रहे हैं रोनाल्ड बार्थ की बुक, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हमें एक बेसिक तो पता हो कि माइथोलॉजी होती क्या है. आई हैव कोइंसिडेंटली दिस बुक विद मी राइट नाउ. इफ यू वांट टू रीड दिस बुक, लेट मी शो इट टू यू. वेयर इज द साइन? जस्ट अ मिनट. लुक एट इट. द नेम ऑफ द बुक इज मिथ एंड मिथ्या. It is about anthology of Indian mythology by Devdutt Patnaik. So that means I have this book. Simply, it is on the table. So I thought like I should show this book to you. So what I was talking about, that I read in the same book, like what kind of characters are assigned to women who are free from their character, from their mind. तो आपने देखा होगा कि कोई भी नदी जो है वो किसी के भी मैरिज के अंदर गृहस्थ आश्रम में टिकती नहीं है. इसका मतलब है कि हमारे कल्चर में, वेदर इट इज द कल्चर ऑफ वेस्ट और से ईस्ट, घरों में ऐसी लड़कियां जरूर पैदा होती हैं, दोज हु डू नॉट लाइक रेस्ट्रिक्शंस, दोज हु आर क्वाइट फ्री फ्रॉम नेचर. तो हमने ऐसी लड़कियों को नदी का रूप दे दिया, and we have given them a character which is quite supernatural, that they come from heaven and then they enjoy their life and they go back there and they just like merrymaking and all. So it does not mean that we have around us these kind of women. Actually इस तरह की जो अभी भी हैं, जैसे जितने भी हीरोइंस होती हैं, सभी हीरोइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट मेजर हीरोइंस इफ यू टेक, तो आपने देखा होगा कि उन हीरोइंस की लाइफ के अंदर दे कांट मैरी अ सिंगल मैन, बिकॉज दे आर क्वाइट, आपने कई बार देखा भी होगा कि दे मैरी नॉट फॉर द सेक ऑफ सोशल सिक्योरिटी. वो आप अपने से उम्र से बड़े लोगों से शादियां कर लेती है, मोस्टली आपने देखा होगा. इसका मतलब है कि दीज ब्यूटीफुल वुमेन आर एक्चुअली अप्सराज. और हमारे एंशिएंट कल्चर में जब हमारे पास हीरोइंस नहीं होती थी, तो एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स the nagar vadhu. The concept of nagar vadhu mean to say the most beautiful girl, उसको राजा अपने पास रखा करता था. So these were the women who used to patriarchy की बात यहाँ नहीं करेंगे, फेमिनिज्म की भी बात नहीं करेंगे. I'm just talking about those highly intellectual women but with free will.
those do not fit themselves, into the patriarchal norms of the society. So the way we, consider them. So this is one example that myth kya hota hai. Myth are created actually. Myth are created to understand the complex nature of human reality. I repeat the sentence. Myths are constructed to understand the complex reality of human being, नेचर एनीथिंग. क्योंकि आपने जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो बहुत मुश्किल से चीजों को समझता है. उसको अचानक से कोई चीज समझ में नहीं आ जाती है. हमें भी कोई चीज समझने के लिए फार्मूले बनाने पड़ते हैं, and every human being has certain perceptions, और वो अपने तरीके से उस चीज को समझ रहा है. नाउ आई कम टू द बुक ऑफ रोलांड बार्थ्स के वो माइथोलॉजीज में क्या बात कर रहे हैं. रोलांड बार्थ्स जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि, as I told you that this writer is talking about a book which was published in 1957. The book is divided into two sections. In the first section is talking about mythologies, and in the second section is talking about myth today. अब बात करते हैं कि the first section of mythologies describes a selection of modern culture phenomena chosen for their status as modern myths and for the added meaning that has been conferred upon them. The way we give meaning, जिस तरह से हम meaning देते हैं आसपास की चीजों को. Each short chapter analyzes one such myth, ranging from Einstein's brain to soap powders, detergents, shaving, blade, and whatever it is. हर तरह की चीजों पे writer has written essay. They were originally written as a series of bi-monthly essays for the magazine. पर्टिकुलर एक मैगजीन थी जिसके लिए उन्होंने ये एसेज लिखे. अब बात ये आती है कि मैं आपको इसको स्ट्रक्चरलिज्म में क्यों समझा रहा हूँ. Why I am explaining it in structuralism. So the reason is that actually जो रोनाल्ड बार्थ है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो इमेजेस होती हैं. Let me read something for you so that you can understand it. The writer says that in the first section he examines a wide range of examples of such experiences, which we see around us. Limited experiences of different, for example, tourism, cooking, whatever, advertisement, literature, film, and other things. In the author's perspective, these things manifest mythic language and all manifest the particular purpose of myth as defined by the author in the second half of the book. वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो इस बुक के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम रूलिंग पार्टी को पावरफुल बनाने के लिए, the people who are already in the power, to make them more powerful, we create certain myths around. They create certain myths, और ये कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म से रिलेटेड है. एंड व्हाई वी स्टडी इन स्ट्रक्चरलिज्म, बिकॉज अ मिथ आल्सो वर्क्स एज अ सिग्निफायर एंड अ सिग्निफाइड. अच्छा, यहाँ पे एक बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई मिथ बताते हैं तो वी टेल अ मिथ विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, एंड बिकॉज वी यूज लैंग्वेज टू give a meaning to a myth. It means myth is also a secondary signification. ये थोड़ी टफ लैंग्वेज, इसको समझाता हूँ. myth is a secondary signification. इसको हम कैसे समझाऊंगा कि जैसे एग्जांपल है, राइटर हैज गिवन एन एग्जांपल कि जैसे सपोज आई यूज अ वर्ड सिगरेट. तो सिगरेट इज अ वर्ड एंड इसका सिग्निफाइड क्या हो गया बताइए. अ पेपर विच इज रोल्ड विद in which there is tobacco. So cigarette is a word and that particular rolled paper is the signified. अच्छा, अब signified जो सिगरेट कोई पिएगा तो उसके साथ बताइए जरा, आप स्क्रीन पे देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन ऑन द पैकेट ऑफ द सिगरेट दैट दे हैव अ लंग एंड कैंसरस थिंग्स आर शोन ओवर देयर. इट मींस नाउ स्मोकिंग सिगरेट इज नाउ एसोसिएटेड विद सिगरेट. इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड द चेन ऑफ सिग्निफिकेशन, कि लैंग्वेज के थ्रू हम कहीं ना कहीं एक और इमेज क्रिएट कर देते हैं. एंड स्मोकिंग इज नाउ रिलेटेड टू कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कि उससे कैंसर होगा. इसका मतलब है कि एक मिथ क्रिएट कर दिया. आपने देखा है हमारे गांव में पहले सभी बुजुर्ग टोबैको कंज्यूम किया करते थे. हैव यू सीन दैट और नॉट? या कि हम सभी तेल खाया करते थे. वी यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट मच ऑयल, बट देयर वाज नो हार्ट डिजीजेस अर्लियर compared to we face heart diseases today. इसका मतलब है कि somewhere they have created a myth that through the advertisements कि नहीं, आपको ना तेल कम खाना चाहिए, घी कम खाना चाहिए. Now latest research says that consuming ghee and it is all about the kind of your working schedule and your lethargy and all such things which create heart diseases. इसका मतलब है कि something which is not truth
is created in front of you. So इसको कहते हैं myth making. Myth making का मतलब for certain things, for certain benefits, for certain harmful things also. It is not like in public or in the advertisement industry or in the cultural signification. एक word आता है यहाँ पे कि आप कोई चीज create करते हो language के through, you create a structure with signifier and signified, and then you start saying that something is good and something is bad. तो राइटर ने उस तरह की बात यहाँ पे की. और एक बात का आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, you have to keep one thing in mind, that myth is a secondary signification, okay, and signifier and signified is the primary signification. Or there is one more structural thing which is important here, that is रोला बार्थ ने एक बुक में बात की थी कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग की, विच आई टॉक्ड अबाउट इन द अर्लियर लेक्चर. डिनोटेटिव मीनिंग मीन्स वेरी क्लोज, प्राइमरी मीनिंग, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग मीन टू से implied meaning or secondary meaning. So in the sense, mythology is not exactly the primary meaning. It is actually a secondary signification. आप exactly myth create नहीं करते हो. myth create करने के लिए आपको बहुत सारा propaganda करना पड़ता है. You have to create a lot many things. You have to do so many things. You have to create. You have to put a lot much money, lot much big people you have to create in front of you, so that when they use that thing, a myth is created. अब बात करते हैं कि सेंट्रल टू द थ्योरीज, वो जो ये राइटर ये जो थ्योरीज लिख रहा है, developed in both section 1 and section 2 of this book Mythologies, is the idea that the need for this imposed propaganda like experience of culture as well as society's perception of it are defined by the bourgeois or the working or consumer class. bourgeois इसको myth को create करता है और working class उसको consume करता है. I repeat, bourgeois यानी कि the rich people, they create a myth and it is consumed by the working class. The example, which I have given in the first section of how mythic language is used are all taken from the bourgeois popular culture. Bourgeois popular culture क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, कोई जैसे एडवर्टीजमेंट ऑफ कार, एडवर्टीजमेंट ऑफ शेविंग. अच्छा, एक बात बताइए, व्हाई शेविंग इज इंपॉर्टेंट? व्हाई क्लीन शेव इज इंपॉर्टेंट? व्हाई द क्रीम which we use to make our complexion fair is important? Because these are bourgeois myth. आप किसी मजदूर को, you just look at a labor class person, he must not have shaved very closely. It does not mean, अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि close up toothpaste, you need a close up toothpaste, इसका क्या मतलब होता है? फेयर एंड लवली. तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं कि जिसे आपने बहुत क्लोज शेव की, then you are a gentleman. So it is a bourgeois myth. ये now this myth is created through advertisement and then it is consumed by the working class. अब क्या होता है, वर्किंग क्लास भी कोशिश करता है कि वो फेयर दिखे, वो क्लोज शेव करे, then he starts putting money in that, and that money is ultimately going into the pocket of the bourgeois class. So I think you can understand now, what the writer wants to convey. And as I told you earlier in this lecture, that somewhere in the mythology, आपको दो चार बातें याद रखनी है. But that the book was published in 1957. Second thing, that it has two sections, mythologies and myths today. And the third thing, that it is based on signifier and signified dichotomy of structuralism. That myth is also a kind of signification. Myth is also a kind of language, and this language is. This signification is secondary in nature. उसको समझाने के लिए मैंने कौन सा एग्जांपल यूज किया कि when we use a language, in this language we always have a signifier and a signified ready. लेकिन it is quite away from structuralism, because in structuralism में हम कहते हैं that there is an arbitrary relationship between the signifier and the signified. Okay, लेकिन mythology में रोला बार्थ कहते हैं कि this relationship of myth and the meaning it creates in front of us is not arbitrary. It is quite fixed and goal oriented. How it is goal oriented? That whatever myth is created, it is created always with a purpose. For example, you are producing an advertisement, then for that advertisement you have a particular population in your mind, you have certain investment in your mind, you have certain profit in your mind. So that propaganda is always quite calculated. ये हमें पता होना चाहिए. So there is the author of this book is Roland Barthes. He acknowledges in the final section of this myth today that there is a paradox in this idea of myth as mask.
उसने कहा है कि ये मिथ जो होता है वो एक मास्क होता है. ही राइट्स दैट मिथ इन दीज टर्म्स इज साइमल्टेनियसली नेसेसरी एंड डेंजरस. वो नेसेसरी भी है और डेंजरस भी है. अब ये इस बात को मैं डिटेल में ऐसे समझा सकता हूं कि नेसेसरी इसलिए है कि समवेयर यू हैव सीन दैट वाचिंग मूवीज, going to malls, all these things somewhere are very harmful for us. So but if you don't go there, like in corona period, we are isolated, home isolated. You all know that somewhere we feel that in our life there is no color. Just imagine your life without mobile phones. Just imagine your life without television. Just imagine. So then you will find that these things which are created, okay, these things are created in such a manner that the companies who have created them are ultimately earning from us. But the second thing is that they are masking also our reality, because our reality is quite dangerous. From here the meaning goes towards existentialism. कैसे? आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बींग्स की का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत डरावना है. एक बार इमेजिन करिए दैट समवेयर वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द एग्जैक्ट डीपर मीनिंग ऑफ आवर लाइफ. तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग लाइफ को बहुत ही बेकार समझेंगे? तो कहीं ना कहीं मोबाइल, मूवीज, टेलीविजन, दीज थिंग्स हैव क्रिएटेड a meaning in our life. लेकिन somewhere they have also divided us from the exact meaning of our life. Our exact meaning of our life is means to know ourselves, which is quite very deep. तो इसका मतलब है कि मिथ जो है वो डेंजरस भी है और एक मास्क भी है. तो ये बात भी आपको मेरी, जहां तक I understand that you must have understood me. Now let me talk about one two other aspects that बार्थेस जो है, रोनाल्ड बार्थेस, जिन्होंने ये बुक लिखी है माइथोलॉजीज, डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस थ्योरी विद द एग्जांपल ऑफ अ फ्रंट कवर फ्रॉम पेरिस मैच एडिशन. ही इज शोइंग दैट, इसमें मैं आपको अपनी मर्जी से एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपने वो WWF की कुश्तियां देखी हैं? आपने देखी है कि कुश्तियां? पहले बताइए, आपको लगता है कि वो जो रेसलिंग हो रही है उसमें दे आर रियली फाइटिंग? टेल मी. You know that they are not really fighting, okay? Or the kind of acting in the cinema, that acting is not very real actually. So it's all a myth which is created in front of us. So it's virtual reality in the modern day world, which is also a kind of myth making quality. Myth making quality is a very common phenomenon. You can all understand that. Even these writers also, they create a myth. For example, I would like to speak up to an extent so that you people can understand that myth is always related with power. कैसे? कई बार मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि तरक्की और सक्सेस एक मिथ है. कैसे बताइए? कि आपको चारों तरफ लोग भाग रहे हैं और they have made you realize कि अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो यू आर लैगिंग बिहाइंड. लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं. अगर आप लेट हो गए हो, फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारे पास 1 ही महीना हमें तैयारी करनी है, हमें तो एग्जाम निकालना ही है. निकलता ही नहीं है. वो तैयारी भी करते हैं बट दे नेवर पास दिस एग्जाम. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि दे हैव क्रिएटेड अ मिथ इन देयर माइंड. इसका मतलब है कि एक रैट रेस ने एक मिथ क्रिएट कर दिया है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक से, एमसीक्यूज से, विदाउट अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली वी कैन क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. ये सब मिथ है. जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं और रियल में प्रोफेसर बन रहे हैं, रियल में इंजीनियर बन रहे हैं, रियल में आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, रियल में आप जाके देखिए कि उनकी सक्सेस के पीछे उनका एक डेडिकेशन, हार्ड वर्क और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है. सो मिथ इज डिफरेंट थिंग विच इज क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ मिथ ऑफ से जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि मोटिवेशनल सेमिनार्स. आई हैव नेवर अटेंडेड एनी मोटिवेशनल सेमिनार इन माई लाइफ. क्योंकि मोटिवेशनल जो सेमिनार है वो एक बहुत बड़ा झूठ है. क्योंकि आपके अंदर सपोज यू डोंट हैव क्रिएटेड दोज एबिलिटीज, तो आपको कोई कितना ही मोटिवेट कर दे, यू कैन नॉट डू द थिंग्स. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशनल सेमिनार इज ऑल्सो अ मिथ. आपको चीजों को क्रैम करना, इट इज ऑल्सो अ मिथ. आपके पास बड़ी कार है तो यू विल बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, इट इज ऑल्सो अ मिथ. यू आर फेयर एंड यू आर टॉल एंड योर बॉडी इज क्वाइट बिल्ट अप विद मसल्स, देन यू आर अ सक्सेसफुल मैन. दिस इज ऑल्सो अ मिथ. Just look at all the richest people of the world, they don't have muscles. So what I want to convey,
any person I have witnessed, I know my professors, they are all aged ones, they are not Instagram. They are not on Facebook, even they don't know how to manage Facebook accounts and all, but still we go to them to understand certain concepts. इसका मतलब क्या है? It is a myth that to that knowledge is power. You keep to know something. And I would like to add one line over here. I have just posted on my Facebook also. It is from T.S. Eliot's famous drama The Rock, that in grasping knowledge, somewhere we have lost our wisdom. And Tennyson has also written it, that wisdom knowledge comes but wisdom lingers. Knowledge comes but wisdom lingers. So I'm giving a meaning to my lecture by giving certain quotations from the different writers, that how myths are created. Myth is something which is a problem in culture. It is just like a proverb. It is never true, but it is true also. It is a mask which hides something, but it makes us away from something also. ये सारी बातें मिथ के साथ पैराडॉक्सेस जुड़े हुए हैं, और राइटर ने इन सब के ऊपर बात की है. तो मिथ और पावर पे थोड़ा और बोलता हूं आपसे. मिथ को पावर से कैसे लिंक किया फिर से बताता हूं. आपको नहीं लगता कि एक आदमी जो है, एक वन पर्सन, ही विल डाई वन डे, सो पीपल विल रिमेंबर हिम फॉर हाउ मेनी एजेस. जस्ट इमेजिन, आज बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनको भी अगर रेनेसा हमारे सामने ना लाए तो वी नेवर नो लाइक हु वाज प्लेटो, हु वाज एरिस्टोटल. इससे भी बड़े बड़े उससे पहले जीवन नहीं था क्या? जस्ट इमेजिन कि प्लेटो और एरिस्टोटल से पहले दुनिया नहीं थी क्या? देयर वाज अ वर्ल्ड. द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आर वेदास. लेकिन वेदा किसने लिखे? सो वी हैव असाइंड दिस task to the divine, some supernatural human being, कि भाई ये तो गॉड का लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग ने लिखा ही नहीं है. इसका मतलब है वी हैव क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स. अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू बार्थ, मिथ इज बेस्ड ऑन ह्यूमंस हिस्ट्री एंड मिथ कैन नॉट नेचुरली अकर. तो ये बात मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि मिथ इज नॉट नेचुरली. ओके, देयर आर ऑलवेज सम कम्युनिकेटिव इंटेंशंस इन मिथ. कुछ ना कुछ किसी को चाहिए, तभी वो मिथ को क्रिएट करता है. तो मिथ क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं, वो आज की तारीख में, सपोज इन टुडेज डेट यू वांट टू अंडरस्टैंड देम, देन यू कैन अंडरस्टैंड देम लाइक ऑल द पीपल हु राइट स्क्रिप्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. They have created in such a manner a myth, like with the tire of a big car, there stands a very sexy lady or a girl with oomph and with the sexual appeal. So इसका मतलब है tire has nothing to do with that feminine touch of sexuality, but somewhere we have linked it with that, so that people will buy that. So but as you all know that tire has something to do with masculinity. Instead you should show some person with muscles. Salman Khan you should show, but in quite contrary to that, we show a woman. You just see there, you will be surprised. So these are created by people with certain intentions, and created by people, myths can easily be changed or destroyed. Also myths depends on the context where it exists. By changing the context, one can change the effect of myth. राइटर ने कैसे एक एग्जांपल दिया है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. जो फैशन होती है ना, उसका एग्जांपल राइटर ने दिया है लास्ट के अंदर, कि इट कैन बी चेंज्ड. हाउ इट कैन बी चेंज्ड? फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि इन फॉल एंड क्या होता है वो वेस्टर्न कल्चर में जो फैशन आता है, फॉल एंड व्हाट वी कॉल इट, समर एंड फॉल आई थिंक. So जैसे suppose you have a salwar, then what will they do? Prerna Joshi, I'm not here to right now give your answers. Please don't ask me such questions. Just attend the lecture, because I'm giving a lecture. I'm diverting my attention. You can directly ask these questions, that how I qualified net 14 times and 3 times JRF. Later on, I will answer them very simply by working very hard, by not believing on the myths, and always doubting on my ability that can I clear it next time also. And I keep appearing, and I keep reading, and I try to understand that a human faculty is always weak. One has to work hard. Okay, so come back. प्रेरणा जी ने मुझे भुला ही दिया मैं क्या बात कर रहा था. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लाइव क्लास एक्चुअली. मुझे याद दिलाओ बच्चों, मैं क्या बात कर रहा था. मैं भूल गया. चलो, एट द सेम टाइम
myth itself participate in the creation of an ideology. तो ये बात भी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दी है कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी ही मिथ है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, अकॉर्डिंग टू बार्थ, myths does not seek to show or hide the truth when creating an ideology. ओके, हाँ, फैशन की बात कर रहा था. तो फैशन में क्या होता है कि जैसे आपने एक चूड़ीदार पजामा है, तो आपको पता है अगले अगले सीजन में वो क्या ले आएंगे फैशन डिजाइनर वाले, वो उसके ऊपर एक छोटा कुर्ता ले आएंगे और वो कहेंगे कि नाउ दिस इज इन ट्रेंड. तो आपको क्या है, ज्यादा पैसा देकर के वो नए ट्रेंड में, बिकॉज यू हैव बीन your psychology has been made, it is drilled deep in the subconscious of your mind that somewhere if you are not updated, if you don't buy a new car, if you are not fashionable, then you don't fit. Jesse, I have long side steps. One of my students, he lives in America, he told me that sir, it is very old, you look like Ranjit and it is old fashioned. If you drive a latest car, then you should have a latest style also. Then I said that who decides like which is the latest style? Any style which suits me is latest. When people did not wear printed shirts, don't take it wrong that I'm being subjective and I'm giving my example. I'm simply showing you that you must have seen कि आज के जमाने में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो go against the flow, against the grain, because somewhere it has been stuffed in their mind that you don't fit if you are not following the fashion. Okay, and they means the people of companies, the materialist people, the capitalists, the people who create myths in front of you. वो क्या करते हैं, इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं और वो आपकी जेब से लगातार पैसे लेते रहते हैं. आपने एक मोबाइल खरीदा, देन आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आउटडेटेड हो गया. आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट आर योर नीड्स. इवन नीड्स आर मिथ्स, यू विल बी सरप्राइज्ड. नीड्स भी मिथ्स हैं कि आपको ब्रेड नहीं खानी थी. अभी देयर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑन फेसबुक, वी वर टॉकिंग अबाउट, आपको मालूम है कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है. हमारे इंडिया की पहली फिल्म थी नीचा नगर, जिसको कैंस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था. तो नीचा नगर आप अगर कभी उठा के देखो तो आज की जनरेशन को मूवी अच्छी भी नहीं लगेगी, बट इन दैट मूवी देयर कम्स अ डायलॉग, बिकॉज चेतन आनंद ने फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था कि the children are it is on pandemic actually, so that's why it's quite relevant in talking about this movie in this particular video कि they are talking about bread, डबल रोटी बोलते हैं उसको. आपको पता है आज के बहुत साल पहले डबल रोटी खाने को लोग हंसते थे कि डबल रोटी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है. एंड जस्ट लुक टुडे, आज मैं जब मुंबई और दिल्ली की बात करता हूं तो पीपल आर दे ईट मोर पाव, मोर ब्रेड एंड मोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर नॉट होल ग्रेन्स, जिनको अपन बोलते हैं, जिससे शरीर नहीं बनता है, इम्यूनिटी खराब होती है, बट दे आर ईटिंग ऑल दीज थिंग्स. व्हाट डज इट मीन? बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट, बट अ टाइम वाज देयर व्हेन ट्रूथ वाज नोन टू द पीपल, बट नाउ इट इज क्रिएटेड एज अ मिथ. देयर आर कंपनीज, नूडल्स ले लीजिए आप, नूडल्स इज अ प्योर मैदा, फाइन फ्लोर. It is not good for health at all. So actually myth means we create a kind of false consciousness around us. According to Barthes, and myths does not seek to show or hide the truth when creating an ideology. It seeks to deviate from the reality. ये आपका reality से ध्यान हटा देता है. Myths purifies the science and fills them with a new meaning which is relevant to the communicative intentions of those who are creating the myth. तो जिन्होंने myth को create किया है उनको बड़ा benefit हो जाता है. जैसे कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो उसी कपड़े को कुछ चेंज करके, जैसे ये कॉलर है, इसको बड़ा कर दो और आप कह दो कि now this is in trend. तो I will feel that this has to be discarded, otherwise I am old fashioned. तो इसका मतलब है कि I will keep working hard, I will never be at rest. इसका मतलब है कि अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में कि माइथोलॉजीज में राइटर ने किस किस तरह की बातें की है. Now let me end this lecture by simply saying that the writer has also talked about certain rhetorical figures. उसने कुछ rhetorical figures का भी यूज किया है, जिसमें एक फिगर की मैं बात कर लेता हूं, टॉटोलॉजी, कि आपको एक ही चीज को बार बार टीवी पर दिखाया जाना, एक ही चीज को बार बार बोलना, तो उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं, मोर देन नेसेसरीली. ठीक है, और उसको कुछ इस तरह से मतलब बार बार, जैसे यू मस्ट बी नोइंग दैट, क्या नाम है, केजरीवाल सुनेगा तो कहीं वो मुझे पकड़ ना ले. केजरीवाल इज कमिंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन अगेन एंड अगेन by spending a lot much crores of rupees of public fund.
अब उससे पूछिए कि क्या जरूरत है बार बार आकर के एक चीज को मतलब टीवी पर आके बोलने की। यू कैन विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन डू इट विद, सो बट ही इज नॉट डूइंग दैट बिकॉज अभी एक फ्रेज फेमस हो गया है, इट इज अ फ्रेज विच इज फेमस दीज डेज, दैट जो दिखता है वो बिकता है। सुना है आपने कभी? जो दिखता है वो बिकता है, but it is not so because I have been in Jaipur and running my institute for last 20 years, and still my institute is always filled and I am existing in front of you, but it does not mean that I died and student did not know me, but now certain people are asking me that you have to do a lot much advertisement so that new students can know you, and then only your true value will be there. So I just want to say that because we are living in a world where it is created, a myth has been created, which is a false consciousness, which is not truth, which is not reality. अभी और भी ऐसे टीचर्स होंगे जो साइलेंटली किसी छोटे शहर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, दे मस्ट बी गिविंग रिजल्ट। इसका मतलब है कि रियलिटी इज डिफरेंट एंड मिथ इज डिफरेंट, एंड मिथ्स आर क्रिएटेड, और उनको अपन बार बार बोल करके इन मिथ्स को हम क्रिएट करते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे डियर फ्रेंड्स। There are lot many other things also, but because एक चीज और लास्ट में आपको लेक्चर के बता के जाता हूँ that when we talk about structuralism, so there are a gang of fours, एक phrase famous है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, what is the so called gang of four writers। तो उनको जो स्ट्रक्चरलिज्म में 4 राइटर्स है, एक का नाम है लेवी स्ट्रॉस, जो आपको मालूम है द सैवेज माइंड जिन्होंने लिखी है, माइथोलॉजी पे काम किया है स्ट्रक्चरलिज्म में, जिन्होंने ब्राइकोलॉज वर्ड का नाम लिया है। एक लाका है जिसपे मैंने ऑलरेडी मतलब एक वीडियो सीरीज बनाई थी साइको एनालिसिस के ऊपर। एक बार्थीज है जिसको हम आजकल पढ़ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज फूको। तो फूको हम हो सकता है कल के लेक्चर में बात करें फूको के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। इट इज ऑलरेडी 41 मिनट्स। पॉलिटिक्स स्टैंड्स ऑन क्रिटिसाइज others and give more importance to themselves। सीमा शर्मा। पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल इज पॉलिटिकल, एक फ्रेज है क्रिटिसिज्म में, थ्योरी में पढ़ाया जाता है। पर्सनल इज, राइट डाउन दिस एंड राइट डाउन इन योर कॉपी दैट who first of all used this phrase, पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्या मतलब है इसका? इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि पॉलिटिक्स क्या होती है। अगर मैं अपने बेनिफिट की बात करूं तो समझ लीजिए कि वो पॉलिटिक्स है। एक और चीज की बात करते हैं तो आपको जाते जाते समझा देता हूं। डॉक्टर जॉनसन का फ्रेज बहुत फेमस है। इट इज सेड दैट पेट्रियोटिज्म इज अ लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ रास्कल। कि जैसे एक आदमी बहुत ज्यादा वंदे मातरम और जनगण मन गाएगा, तिरंगा लहराएगा, इसका मतलब है समवेयर ही डजंट हैव अ वर्क, और वो लोगों को बुद्धू बना करके कुछ लेना चाहता है। तो इसलिए वो दुनिया के सामने ही वांट्स टू शो। जैसे एवरी टाइम यू मस्ट हैव सीन कि प्रधानमंत्री अगर अपने पीछे तिरंगा लगाते हैं तो ओके समझ में आता है, लेकिन आजकल मैंने देखा है एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज यूजिंग शोइंग दैट दे आर वेरी मच एसोसिएटेड, दे आर वेरी मच पेट्रियट। अगर वो पेट्रियट झंडा नहीं लगाएंगे तो क्या वो पेट्रियट नहीं हो जाएंगे? बिना उसके वो पेट्रियट नहीं हो सकते का। इसका मतलब है आइकन, सिमियोटिक्स बोलते हैं इसको। इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थ्रू इमेजेस कहीं ना कहीं वी वांट टू हैव सर्टेन बेनिफिट। तो ये भी एक इश्यू है जिसको अपन किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड दोज हु गॉट disheartened because I could not speak thoroughly in English, and try to understand. If you listen to this lecture, I don't find that you won't be able to understand it. Please write comment on the comment sections on the video. Kindly share this video, and those who are new can give me more subscribers by spreading my message to the to their friends and all. Thank you very much.